वेलकम गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। और आज हम फिर खेलने वाले हैं होराइजन ज़ीरो डॉन, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। ये डीएलसी है फ्रोजन वाइल्ड्स की। और वैसे तो ये डीएलसी 2017 में रिलीज़ हुई थी और सेम ही डेवलपर हैं इसके, गोरिल्ला गेम्स वाले। तो ये पीसी के लिए 2020 में रिलीज़ हुई थी। ये मेन गेम है होराइजन ज़ीरो डॉन, उसी के साथ इन्होंने रिलीज़ की थी ये। तो डीएलसी है, तो वैसे ही मैं पहले जब गेम खेल रहा था ये वाली, तो जो एरिया है डीएलसी वाला वो मैं पहले से ही बता रहा था कि ये एरिया है और इसमें हम बाद में जाएंगे और बाद में स्टार्ट करेंगे इस एरिया को, क्योंकि ये डीएलसी है तो इसे सेपरेट रखना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी चलते हैं गेम की तरफ और स्टार्ट करते हैं डीएलसी। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस डीएलसी के बारे में, क्या स्टोरी होगी, क्या नथिंग, कोई आइडिया नहीं है। हालांकि गेम के बारे में तो मेरे को पता था क्योंकि मैंने इसकी स्ट्रीम देखी थी, लेकिन डीएलसी के बारे में आई थिंक मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेट्स सी कि स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलेगा। सो अभी चलते हैं गेम की तरफ। और पता नहीं आज YouTube का क्या बग चल रहा है। मैं जब स्ट्रीम सेटिंग्स वगैरह कर रहा था उसकी स्ट्रीम की, और उसमें मेरे ख्याल से मैं थंबनेल के लिए जो पिक्चर डाल रहा था, उसके बाद पता नहीं क्या रीज़न था, वो YouTube सेव ही नहीं कर पा रहा था पिक्चर को। सर्वर पे कोई सेव नहीं हो रहा था। और पहले मैंने जो स्ट्रीम स्टार्ट की थी, अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी सी स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी, तो वो भी मैं जब मैंने पिक्चर डाली थी तो पिक्चर ली नहीं उसने, पुराने वाली पिक्चर ही थंबनेल में दिखा रहा था जो कि फार क्राई गेम की थी। तो मैंने कोशिश की पिक्चर को अपडेट करने की, लेकिन यूट्यूब ने अपडेट ही नहीं किया। उसके बाद मैं फिर बहुत देर तक ट्राई करता रहा। स्ट्रीम को एंड करने के बाद मैंने कहा चल दूसरी स्ट्रीम बनाते हैं, और मैं बहुत देर तक ट्राई करता रहा, बट यूट्यूब का कोई आज दिक्कत चल रही है, थंबनेल ले ही नहीं रहा वो। ऑलराइट, सो ये लास्ट मेन मिशन बचा हुआ है। तो ये इसलिए बचा हुआ है क्योंकि अगर आप गेम कंप्लीट कर लेते हो तो वापस आप इस मिशन पे आ जाते हो। तो गेम कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम चलेंगे यहाँ पे। ये है फ्रोजन वाइल्ड वाला एरिया पूरा का पूरा। तो लेट्स गो। The smoke from the mountain is worse today. A bad omen for the ritual. You died on thunder's drum. Your songs will not be ऑलराइट, जो क्वेस्ट है, मेन क्वेस्ट, इसको हटा लेते हैं भाई क्योंकि इसका मार्कर दिखाता रहेगा अदरवाइज। और 3 स्किल पॉइंट है तो कुछ ना कुछ ले लेना बेटर रहेगा। ये अच्छा है या ये अच्छा है? लीडर स्ट्राइक अच्छी है वैसे।
ये ऊपर क्या भाई? So many died. ऊपर जाऊंगा कैसे? कुछ पड़ा भाई ऊपर? भाई ऊपर चढ़ ही नहीं रही है। वो भी ऊपर कुछ पड़ा हुआ है। ये भी है, ये कुछ ना कुछ पता नहीं क्या है ये। Must not forget the importance of ceremony. क्या हाल है ओमकार गेमर्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। आज हम खेल रहे हैं फ्रोजन वाइल्ड्स। अच्छा, ये कोई लाइट एमीटर है भाई, ये हर जगह लटका रखा है इन्होंने। और ये क्या है भाई, बाद में पता लगेगा मेरे को, अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या है ये। ऑलराइट, तो ये एक्सप्लोजन हुआ है यहाँ पे, ये कोई वोल्केनो फटा है, पता नहीं क्या हुआ है। तो ये सारे लोग इसको देख रहे हैं। Our shaman has abandoned us. Our chieftain has led our best. Get ready for a rare sight, Nora. Bergrand, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead, but not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off. ये कैसी आवाज थी भाई? Grasp your grief, my hunters, and kill it! एक फोटो तो बनती भाई। For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the demon that frenzies the machines against us.
And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies. Our prey. The daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Aloy. Aloy. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Aurea, spouting on about spirits and demons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Aurea vanished, I thought the crazy might have gone with her, but no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin, like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered, like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave, or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo-jumbo. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Aurea's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. A land cold enough to crack teeth, filled with wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced aid. Oh, believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. And Aurea is the one who spoke about this daemon? That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's drum. And they believed him. But you don't. Look, I don't know what Aurea found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because of the daemon, or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Aurea's not around to explain. She took off, and no one knows why. And Aurea is the one who spoke about this daemon? That's right. But you don't. The machines, or it could, but Aurea's not. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Warwick chieftain. His voice carries a lot of respect. Not that you hear much of it. Man talks about as much as a dead fish. But when he and Aurea came to town with their Warwick, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. Know what else I saw, Aloy? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then, he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. What are these Warwicks about, Bergrand? Some sort of tribe within the tribe? Not like our clans back home. You don't get born into these things. They hold tryouts. Prove your best at something and you might get a place. Some Warwicks come and go. Some last as long as metal. The whole Banuk territory, Banur, is just a bunch of the biggest, oldest Warwicks. I'm not sure if I'm less confused or more confused. Well, here's the sure thing. Each Warwick has a chieftain and a shaman. They make the decisions. All well and good,
Except the chieftains are hard-headed, and the shamans have their heads in the clouds. You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. Good location. Ripe for change. We were barely scraping by until this place started filling up for Araya. A great prophet is coming, they said. I heard prophet. Honest mistake. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through to enough of them. We could really put this place on the map. Or at least on a map. We? Me and my daughter. My assistant, Varja. My assistant and my daughter. We seem to get along better as business partners. Her mother wanted me to show her a trade. She started tinkering with weapons. Say, when you need a break from this Banuk carry-on, stop in and see her. You're both, how do I put it? Women? No. Independent. Look for her at Long Notch, the easternmost Banuk camp. I want to know more about this Damon. It's crazy talk, Aloy. Or there's something to it. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Araya. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rests. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. Well, now I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrand. Don't mention it. I wonder if Aratak could tell me more about Araya or Thunder's Drum. Might be worth a shot. ओके ये भाई साहब ये ब्लू कलर का कौन सा ये मर्चेंट आ गया? Olgrid's bandits are parasites, surviving off Banuk blood and sweat. I mean, on top of all we've endured, we find ourselves... There's no time to waste worrying about them. बनूक चैंपियन वो भाई साहब ये क्या आइटम है? नाइस बेचने वाली चीजें तो बेच दी भाई। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा ये बुक कैसा बो है? स्ट्राइक बो, ब्लू ग्लीम। अच्छा ये मेरे को भाई इकट्ठे करने हैं ब्लू ग्लीम। कितने चाहिए? 16 ब्लू ग्लीम। ये पावर शॉट वो मेरे को सही लग रहा है वैसे।
ब्लू ग्लीम, ओके। इससे ब्लू ग्लीम मिल जाएगा वैसे? नहीं मिलेगा भाई। ये है क्या ब्लू ग्लीम? When the old ones were fresh in their graves and our numbers were still small, it was she who led us through the frozen wastes. We also remember the ravenous tribe, who delighted in sucking the marrow from our broken bones. Everywhere Banukai and Hawerak fled, the ravenous tribe were never far behind. Seeking a way to defeat them, Banukai went into the wastes and let the wind whip her cheeks. And when the cold brought sleep, she dreamt of light. She saw it behind the world, a great calming sheet of icy blue. And she saw something new. Herds of machines, each filled with the same blue light. When she woke, she knew which star to follow. She walked for many days. भाई इसको तो मैं पिक ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर ये ब्लू ग्लीम है क्या? कहाँ पे मिलेगा ये? An outlander. Not many of you in the cut, not since the war. इससे बात कर लेते Should हैं। not pile his father's guilt onto the new Carja King's shoulders. These are different times. ओके, इससे ऊपर क्या कैसे जाएंगे भाई? Abandoned us to the Carja. और पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ लेकिन जा रहा हूँ बस। क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है? ऑलराइट, और ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, और ऊपर चलते हैं। Quite a view you've got up here. It's a useful perspective. How fleeting we are when the world is so wide. From up here, you can see how the light paints across the land. Ever changing. That's a lesson. All our marks will pass. That outlook sounds a little depressing for a painter. Haven't met many artists, have you? Song's Edge needs new stories. I scrubbed its past off this rock to start anew. But a new start needs new colors. Fresh pigments. Like none have seen. Have you always been a painter? I've always painted. But I wasn't a painter until I was driven out of Banur. Up there, the markings are eternal. They paint over the same lines, the same colors, over and over. As a child, I learned from copying them. As I grew, my heart sank at the familiarity. All of us Banuk might as well be trapped in glacier ice. We have the look of life, but never really moving. अच्छा, इससे पिगमेंट भाई वो ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। These pigments you want. Where should I look for them? Salts gather at the edges of geysers and hot pools. Crystals cling to the rocks and cliffs. These pigments you want. Where should I look for them? Salts gather at the edges of geysers and hot pools. Crystals cling to the rocks and cliffs. Rocks and cliffs, okay. The Banuk rock paintings are impressive, but, You want to know what they mean? That's not the right question, but I'll answer anyway.
Some are a call to the machines. The sacred shapes you see on metal casings, or on a cauldron door. Do the machines listen to the call? I don't know. Others, like mine, are a call to the tribe. You could say inspiration or prophecy. And sometimes even men listen, if the painting is loud enough. I'll see what I can find for you. Seek out the vibrant ones. A spring of sudden color among snow or rock or metal. That's its own reward. But I'd reward you as well. ऑलराइट, और ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते भाई। एक मिनट, यहाँ से कोई रस्सी नहीं है जाने के लिए? नीचे है। Chosen a dangerous land to visit, Outlander. But I admire you. Remember, Bankai, when the old ones were fresh in their graves and our numbers were who led us through the frozen wastes. We also remember the ravenous. A hard truth best learned early. The songs of the least distinguished runners fade to silence. They're never sung again. ये क्या बोल रहा भाई? You seem sad, stranger. I heard you mention a flood? Yes. A sudden deluge, without rain or melt to explain it. I'm Lai, the drummer of Deep Din. Or at least I was, till it disappeared under the waters. Deep Din. What's that? A hollow, carved out by the old ones. A chamber, a basin, and a musical instrument all at once. My life, my calling. I'd explain it by playing for you if I could. But its pipes are deep under the water now. So Deep Din is a place and a musical instrument? Yes. Pipes that carry a perfect tone beneath a sonorous basin. A wondrous edifice the old ones used to carry music far and wide. During the war, my father played the pipes to rally the Banuk against the Karja. I'm the drummer now, but our battles are few and far between. Mostly I play for the joy of it, or to remember my family. Of course, if the waters don't recede, what's the point of joy? Or remembering? So the waters came fast. One day it was dry. The next, the nearby river had risen and the entire basin was flooded. I don't understand it. There was no rain, not even any clouds, and yet the river rose higher than I'd ever seen it. And there it remains. A flood without rain. That is strange. Where is this place? I'll have a look if I'm in the area. Just northwest of here. Look all you like, but I don't see what good it'll do. The floodwaters aren't going anywhere. How does one ask a river to relent? No more music. The flood saw to that. ये सो भाई, ये एक तो सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा कि इनकी जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जितने भी मॉडल्स इन्होंने बना रखे हैं, बहुत ही रियल बनाया है और स्किन भी रियल लगती है, फोटो रियलिस्टिक। पता नहीं कैसे किया इन्होंने। इतनी कम साइज में इन्होंने इतनी सारी डिटेल डाल दी है गेम के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर, और एनिमेशन भी बिल्कुल परफेक्ट है। पता नहीं कैसे इन्होंने किया अचीव ये, मैंने किसी और हाई एंड गेम में ऐसा देखा नहीं है। और वर्ल्ड भी इतना खूबसूरत है, तो भाई परफेक्ट है हर मामले में गेम। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि रिवर फ्लड हो गई, तो भाई रिवर तो
अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तब भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना बारिश होगी तभी रिवर फ्लड होगी। Painting, it will be cause for celebration. The next. और मैं क्वेस्ट देख लेता हूँ जो हमारी क्वेस्ट है। अभी एक्टिव क्वेस्ट है फाइंड नार्टुक, टॉक टू आरटाक। ये कर लेते हैं भाई पहले। Flood came. God, one day, that's all I ask. One day, I'm not worried about what happens So, Okay, if I want to learn more about how this daemon affects the machines, I've got to find wonder what Guerrilla. sort of challenge To they do that, I need to talk to her apprentice, who followed the river north. ये कैसी रिवर है भाई? मेरे को लग रहा है सॉल्ट मिल जाएगा मेरे को यहाँ से। your outlanders have. We work our fingers raw at the dye camps, but still the hunters complain about the colors of their garments. ये लोग कर क्या रहे हैं भाई? The rain's letting up. Going easy on me now. Any news from the hunt? The herd isn't roaming far from the camp. Keep them together this time. Then we wait. But I bet we'll see a stray. All right, I'll keep watching. ये क्या चीज़ है? Outlanders. Gorge Outlanders. She was incredible. Stopped her Val without breaking a sweat. I had no idea the Nora were so fierce. That crazy Asaram tried to kill our sunshine. A woman now stands as Sunhawk of the Hunter's Lodge. So, she played by the rules and won. A shame a woman became Sunhawk of the Lodge. But at least she did it to honor the men of her house. I had a bad dream last night. Can't remember it, just that nagging feeling. Han Padish once again. ऑलराइट, सेव तो कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम। I could not ask for a more noble house. Bergren said Array's apprentice went north of the river. Hopefully not too far. Goat. That must be Naltuk, looking out of that tower. It looks like it's sending out a pulse or signal. ये क्या चीज़ है भाई? Interesting. कंट्रोल टावर। Maybe I could override it. ओवरराइड कैसे? Shields overloaded by that pulse from the tower. Can I override it? There's the pulses from the sun.
ओ भाई क्या चीज़ है ये, नई चीज़ मिली है। ये भी ओवरराइड हो गया क्या? नहीं। ओके कुछ खास मिला ही नहीं इससे, मेटल शार्ड ही मिले भाई। यार मैं मिशन पे जाने से पहले ना इसको कंट्रोल कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पूरा एरिया ओपन हो जाएगा इससे। They go on forever. Atomic? What did it take to knock one of those over? They're built to last. ये आपस में क्यों लड़ रही है मशीन्स भाई? ये अजीब कहानी है। Yeah. Let's go, ऊपर चलते हैं। इनको अवॉइड ही कर देते हैं भाई। Back to your business.
भाई एक तो गया भाई। लेट्स सी। Haven't seen a part like this before. That's a big one. ऑलराइट, और भी बचा है? नहीं। लेट्स गो, नीचे चलते हैं। सारे अलर्ट अलर्ट हैं भाई, क्या चक्कर क्या? That's it. I'm already gone. तो कहाँ गया? या लेट्स गो भाई। मैं हैरो के अलावा और कोई कुछ इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ यार, ये बड़ी गंदी आदत है मेरी। कहाँ पे जाना था? यही जाना था ना, नीचे, क्योंकि इस साइड तो कुछ भी नहीं है और नीचे जाना पड़ेगा। ये कौन सी मॉडिफिकेशन थी? एक मिनट। फायर कोयल, ठीक है। नाइस।
और यहाँ पे क्या? पता नहीं किस लिए था ये। और ये ऊपर जा रहा रास्ता भाई, ऊपर क्या ही करूँगा मैं जाके। बहुत टाइम लग रहा है भाई। Just a race. From a long time ago. The scavengers have just devastated. ये गया, मर गया क्या? नहीं, अब मरा। और भी मशीन सब भाई नीचे तो, लेकिन ये बंदा कहाँ पे है? भाई कोई और भी है पीछे। तीन तीन आ गए भाई। क्या ये तो ऑलमोस्ट। ऑलराइट गया भाई। आनंद दुबे भाई, ये वॉलपेपर कहाँ से लाए हो? बहुत अच्छा है। कौन सा वॉलपेपर भाई? हमको भी यही वॉलपेपर चाहिए। कौन सा वाला कह रहे हो यार? वॉलपेपर या थंबनेल बोल रहे हो? ओ भाई और आ गए। ऑलराइट ये तो गया, एक और बचा। नाइस गया। That's the last of the scavengers. जिसमें एस्ट्रोनॉट वाकर। अच्छा अच्छा वॉलपेपर नहीं भाई, वीडियो है वो एक्चुअली मैंने एक साइट से डाउनलोड किया था। वो फ्री इस टाइप के ना बैकग्राउंड वीडियो बनाता बंदा फ्री। तो मेरे को वो साइट याद नहीं है, मैं बता दूंगा वैसे।
अभी तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को याद नहीं कौन सी साइट से मैंने किया था। तो बहुत अच्छे अच्छे उसके पास, बंदे के पास वीडियोस हैं। तो मैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे बता दूंगा आपको देख के, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो लिंक होगा उस जगह का, उस वेबसाइट का। ओके, अब ये कहाँ पे है टॉलनेक? तो वाकई बंदे में बहुत अच्छे वो बना रखे हैं वीडियोस। ये सारे के सारे अलर्ट हैं, पता नहीं क्या रीज़न है भाई साहब। Looks like the scavengers ripped out 3 major parts. उस साइड है ये। I could bring them back. Maybe I could even reactivate it. Look at what's inside its head. अभी ये कौन सी गुफा है? What the hell? अच्छा ये है, ये तो फ्रोजन हुआ पड़ा है। मेरे को इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्या? डिस्क्रिप्शन में डाल देना। हाँ भाई, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। बाकी वो नए नए बनाता रहता बंदा और डालता रहता। मैंने वैसे उसका कोई भी लिंक वगैरह नहीं रखा है, हालांकि मेरे को रखना चाहिए था क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका वॉलपेपर कर रहा हूँ, उसका वीडियो यूज़ कर रहा हूँ। ओ भाई भाई भाई, अभी गिर गया था। ऑलराइट, इसके ऊपर कैसे चढ़ूंगा मैं? What the hell? कौन सा गेम है ये? है भाई वही होराइजन ज़ीरो डॉन, लेकिन इसकी ये DLC है और इस DLC का नाम है फ्रोजन वाइल्ड्स। एक मिनट, वहाँ पे कुछ नज़र तो आ रहा है मेरे को उस साइड, लेकिन उस साइड जाएंगे कैसे? Oh no 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 no! ओ भाई साहब, टालने का ये कैसे करूँगा इसको मैं? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मेरे पास तो इतना स्टोरेज ही नहीं है कि गेम खेल सकें। कितनी जगह बची हुई भाई तुम्हारे पास? ये वैसे काफ़ी सस्ती हो गई थी ये गेम बीच में, मेरे ख्याल से अभी थोड़े टाइम बाद स्टीम की ना सेल वगैरह आएगी तो उसमें बहुत सस्ती मिलेंगी ये गेम्स। अगर खेलनी है तो जगह तो बनानी पड़ेगी भाई। मैंने भी तो 2-3 गेम्स करी थी, लेकिन उनमें से कई गेम्स मेरे को हटानी पड़ी क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं थी। और इसको कैसे करूँगा मेरे को ये नहीं समझ आ पा रहा। यहाँ से कुछ है? नहीं। एक मिनट, मैं नैरेटिव देख लेता हूँ कि क्या है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। मेरे को लगता है ये होगा नहीं ऐसे। भाई ये तो फ्रीज हुआ बड़ा पूरा पूरा बंदा, ये देख रहे हो? 240 GB का SSD ही है। अच्छा भाई 50 GB कम से कम अगर तुम्हारे पास होना तब तुम गेम कर सकते हो ये वाली। मेरे ख्याल से 50 GB की है, मेरे को ये वैसे याद नहीं है इसका साइज़ था कितना, लेकिन बड़ी है ये थोड़ी सी
क्योंकि इसमें ये DLC भी साथ में ही है, खाली गेम नहीं है, DLC भी है। तो बहुत अच्छी गेम लग रही है मेरे को तो, इसकी एनिमेशन सब कुछ बहुत बढ़िया है। मेरे को यहीं चलना चाहिए आई थिंक। और मेरे पास भी 2 SSD हैं 250 GB वाली, तो मैंने भी 1-2 और गेम कर रखी थी, तो उसको रखने के लिए मेरे को एक हटानी पड़ी, इस गेम को रखने के लिए बाकी गेम हटानी पड़ी। तो ये भी बड़ी दिक्कत है भाई स्टोरेज की। मैं सोच रहा हूँ एक SSD और ले लूँ। भाई कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, इतनी बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे। यहाँ पे कोई रहता कैसे होगा भाई? दे ये एरिया अच्छा है भाई। वाह, ये क्या है? कंट्रोल टावर। हम बस वैलोरेंट रखे हैं, बाकी एंड्रॉयड एमुलेटर अरे भाई साहब, अच्छा जी। वैलोरेंट तो यार बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँ, अजीब गेम है। मेरे को तो इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसमें जो उसका एंटी चीट है ना, वो गेम वो आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो उससे उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो मशीन लेवल पे काम करता है वो। तो भाई मेरे को उस पर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, उस एंटी चीट पे। मतलब वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी निकाल सकता है वो, और वैसे भी चाइनीज़ फंडेड है वो, तो इसलिए मैंने किया ही नहीं। तो भाई इनको मारना पड़ेगा क्या? This must be the ruin Laolai was talking about. Dead. Flooded too, like she said. Side walls. Probably came from somewhere upriver. Follow the river, find its source. Seems simple enough. अब कहाँ पे जाना है? Follow the river upstream. तो इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। अब इसको फॉलो कैसे करूं? आई थिंक उस साइड से करना पड़ेगा। ऐसे कैसे होगा भाई? ये मशीन्स तो चारों तरफ खड़ी हैं, इन्होंने देख लेना मेरे को अगर मैं पास गया रिवर के बिल्कुल भी। ओ नो 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 नो, ये किधर ही आ रहा है? Must be the entrance to this den. कौन सी? भाई इतनी स्नो गिर रही है यहाँ पे, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा कुछ। मेरे को लगता मारना ही पड़ेगा इनको। वाह, इसको मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता हूँ।
ओ भाई कितना भयंकर है ये। क्या ये तो मर गया। बाकी और बच्चे हैं, इनसे भी लड़ना पड़ेगा। I can get out of this. लूट लेते पहले इसको। नाइस ओपी गेम प्ले है। हाँ भाई गेम बहुत ही बढ़िया है ये। इसमें एनिमीज बड़ी ज़बरदस्त हैं। मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे पास और मॉडिफिकेशन अच्छी वाली हैं तो कर ही लेनी चाहिए भाई। इसमें 45 है तो मेरे को अच्छी वाली भी मिली थी 49। हाँ ये रही 43 है ये तो बढ़िया है। ये 44 है। हाँ ये भी बढ़िया लगा हुआ। बाकी सब तो ठीक ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ ओ भाई कितने सारे हैं तो। मैं सबसे लड़ता रहूंगा क्या? कोई और तरीका नहीं है यहाँ से जाने का? अच्छा मैं वहां से जा सकता हूँ यार। भाई सारे के सारे इधर ही आ गए। इनके बीच में फंसना ठीक नहीं है। तो भाई इधर भी है एक।
लगा इसको। अब इसके ऊपर अग्नि वर्षा। भाग रहा है। ऑलराइट, और मैं इसके ऊपर तीरों से वार करूंगा। मर गया एक। एनिमेशन तो खतरनाक है इसका, मेरे दिल आ गया इस गेम में। एनिमेशन भी बढ़िया है इसमें, और मैं और बताता हूँ मैं क्या बढ़िया है इसमें। अच्छा, इसमें जो मॉडल्स है ना, वो इतने हाई क्वालिटी के मॉडल्स हैं कि ओरिजिनल लगते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल बंदे जैसे आपको लग रहे हो, जैसे वो ओरिजिनल कोई बात कर रहा हो ना, बिल्कुल वैसे लगेगा। एनिमेशन तो बढ़िया है ही है, और उसके बाद करैक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक मिनट, यहाँ से आगे कहाँ जाना भाई? अच्छा, नीचे जाना। नीचे तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, उस साइड जाना भाई। भाई पहले यहाँ ले आते, बीच में लेके जाना जरूरी था। Now what? यहाँ पे क्या करना है? I think there's frost between my teeth. What the hell? यहाँ करना क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, ये देख लेता हूँ ये क्या चीज़ है। मेरे को लग रहा है और आगे जाना पड़ेगा। फॉलो द रिवर अपस्ट्रीम, और ऊपर जाना है। ओके, भाई इस डैम का कोई चक्कर तो नहीं है कहीं? ऊपर तो कुछ भी नहीं है।
मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ इस डैम में कुछ, हमें डैम तो नहीं चलाना कहीं। नहीं नहीं, ये रास्ता जा रहा है भाई। ओ भाई साहब, इसको भेज देते हैं फालतू की आइटम। बहुत बढ़िया, ये भी रास्ता जा रहा कहीं पे, लेकिन हमें जाना है इस साइड। There. That must be where the water's coming from. Looks like something the old ones built. ओहो भाई साहब, ये क्या चीज़ है? ये तो डैम बना रखा है इन्होंने बहुत तगड़ा। भाई उन मगरमच्छों से तो मैं बेमतलब ही लड़ता रहा। वहाँ लड़ने की जरूरत नहीं थी वैसे। ये आवाज़ किसकी आ रही है? पहले यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कोई काम की आइटम ना हो यहाँ पे। Well, somebody wanted in. Nearly blew this entire ledge off just to get through the door. कौन आ सकता है यहाँ पे? Flooding detected. Evacuation recommended. Overflow basin compromised. The overflow basin. Is that the din? Looks like a control center. What happened in here to start the water flowing? लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो किसी ने किया है ये सब कुछ। Intake tower malfunction. Drainage system offline. That's probably not good news. Looks like most of the facility is underwater. How did this happen? अभी तो आ रहा था एग्जामिन का। I should be able to shut this place down from here. Someone made a mess of this. If I had the right parts, I'll bet I could get it working again. ओके, पार्ट्स चाहिए इसका मतलब। मेरे को लग ही रहा था क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो। Another holographic interface. Must be some kind of code. The lock positions. Helpful. ये है मेरे पास। Piece is missing. Not getting in here without it. और यहाँ पे जा पाऊंगा मैं? Explore the dam.
यहाँ पे कुछ है भाई। Alright, so okay, like how do we want to start this farewell thingy? We might be the last actual people to ever see this place. Yeah. It's, you know, so. नाइस। फ्रोजन वर्ल्ड्स की ऑडियो डेटा पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे सारे के सारे। ये अभी हमें पहला मिला है, और टेक्स्ट वाले यहाँ पे आएंगे, और क्वेस्ट यहाँ पे। होलोग्राम डेटा पॉइंट्स, अच्छा जी बहुत सारी आइटम्स है यार। ये क्या चीज़ है? कंट्रोल टावर। अच्छा इसके ऊपर ओके, इसके ऊपर मैं एरो मार के इसको कर सकता हूँ डिसेबल टाइप कुछ। Someone's been through here. Not that long ago. ऑलराइट, यही बंदा गया है। Ossaram. Are you all right? You don't know how happy you just made me. For a moment, I thought my fire was snuffed. My forge gone cold. But nope, nope. Not old Gildan. You're welcome. Wait. Start from the beginning. What are you doing down here? Ow! My apologies. When you mostly talk to yourself, you can tell your stories in whatever order you like. There's an artifact in that storage room I simply must acquire. But as you may have noticed, the door won't budge. I took one of those roundish, ringy what's-its from the wall beside the door. No luck. So I had to go with that panel with the button. Even less luck. My gentle experimentation caused the chamber to flood a little. So I pushed the button again, perhaps a little too enthusiastically. Sparks and smoke. Now, obviously, I came here to investigate. My cautious footsteps may have contributed slightly to the collapse of a bridge. When the bridge began to collapse, I may have, for the sake of expedience, abandoned the cumbersome ringy what's-it to the waves. By the time I thought to give up the endeavor, the door had closed behind me. And thusly do we come to the present moment. You said something about an artifact? Indeed. That storage room is brimming with treasures from the old ones, but one in particular caught my eye. An intricate looking glass. I've only seen one such device before. My old mom brought one back for me from wherever she'd gone to that time. I remember holding it, staring into its face, and seeing myself and my mother just over my shoulder, smiling. And one of these looking glasses. It's in the storage room. Oh, yes. I'm quite sure. I peered into that dim little chamber, and there it was. I've wanted to find one for so long, Yes, this time I'm sure I have. A ring. Well, there's no way we're getting into that storage room without another ring. It's part of the locking mechanism that controls the door. You don't say. Well, that's fantastic news. Marvelous, even. You've got two hands. I've got two hands. Perfect! My savior, my salvation, and if you like, why wouldn't you? Of course you will. My accomplice. Together, that ring is as good as ours, and with it, the storage room and its spoils. Didn't you say you dropped the ring in the water? Well, I'll grant you that adds a heretofore undiscussed level of complexity to the proceedings.
So you found the button that controls the flow of water. Quite by accident. And then you broke that button. Also, quite by accident. The panel's the only way to shut this place down, as far as I can tell. This isn't gonna be easy. That storage room is filled, top to bottom. Would you be surprised to find the parts you need in there? I certainly wouldn't be. So, we need to replace that ring and get into the storage room. Then I can fix the panel and shut this place down. And I can finally wrap my fingers around that looking glass. Okay, Gilden. How are we gonna get that ring? 2 sets of hands, girl. 2 sets of hands. Behind us lie a pair of enormous gates, but I believe the gates must be operated in tandem. Together, we can dry this place out. Guess we better get started then. I guess we better. Rough waters. No way I'd be able to swim. Up ahead, girl. See the valve? Time to put our hands to use. I'll take care of this one. There's another valve on the other side to lock the gate in place. Would you mind heading across and doing the honors? You know, I'm reminded of a delve I undertook out near the plant. Stone ruin, wild tall, and pitch wild. Alright, ऊपर ही जाना है, इस तरफ तो बंद है. अब ऐसी पुरानी जगह पे भागना तो नहीं चाहिए बट Tub of stagnant water. Charming. Marvelous! You made it! Now grab that valve and give it a spin. On it. A little more now, and I should be able to get the blasted gate moving. There. You should be able to lower the gate. Huh? Right you are! Now, when I get this gate down, you'll need to turn the valve again. Ought to lock this thing in place. नाइस हो गया. One gate down. Halfway through then, aren't we? To the second gate! A ladder is a rare and special thing, girl. Can depend on it to take you exactly where you need to go, and no further. भाई क्या बंदा है? I'd wager the valves for the second sluice gate are somewhere above us. Now, how are we gonna get up there? Let me look around. See what I can find. ये कुछ है यहाँ पे. Supply crate. Looks like I could jump across on that rickety rusting platform. I'll find a way up. Oh भाई. Nice jump! Nice! What am I saying? That was stupendous! Not too much already. Never seen such absolute disregard for personal safety. Thanks, I think. Now what? एक मिनट ये क्या? Ready? 1, 2, 3, 4! Caught sellouts and runaway cowards! Wait, see, cut it. I forgot the words. Tim. Shit, we started off so strong and then it all just exploded. Well, that's sort of my MO. No. Heavy stuff. Band-aid. We need one. Ah, you're right above me. Just send that ladder on down. Look out below. बहुत बढ़िया. Now we've done this once before. Should be as easy as falling down a hole. All if you right. take the valve on the other side,
Let's set up the same way on this side. I should look for an access tunnel. This is my sort of delve. एक मिनट भाई, पीछे देख लूं कुछ काम का ना हो यहाँ पे। अबे यार, ये क्या चीज? अच्छा भाई अपने आप से ही बातें करी जा रहा बंदा। Gildan. ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है? Nothing here. Okay, Gildan, turn the valve. It's not working! Damn thing's too heavy. Glance behind me, would you? See anything big and, broken? Counterweight. Looks अच्छा like ये part of the counterweight broke off. If I can get up there, my weight might be enough to get it moving again. Hang on, okay? I've got a plan. I need to get up higher. Could climb up that wreckage. That's pretty much what I do now. Now what? ऊपर? Can't jump straight to the counterweight from here. But I could climb higher, get above it. भाई कितना खतरनाक है। Going down. Almost low enough to jump. You can make it! Let's see another one of those mad leaps! Got it. We're good to go. You were a sight to see. Bounding from metal rust trap to metal rust trap. Still a bit of water, but low enough, wouldn't you say? Now then, where's that ring? Good question. Well, at least I should be able to swim now. Snap maw! It's a snap maw! Very, very big snap maw! I see it, Gildan. Very big, very, very big! Just stay out of the way. Forge, forgive me. What if that snap maw swallowed that ring we're after? Just gobbled it right up. We'll find out after I've killed it. कहाँ पे जाना है? ओके, इससे लड़ना है मेरे को।
वाह It's dead. Marvelous. So, the ring. Maybe if you pry its jaws open and reach inside. You were right. This thing did swallow the ring. That's the old Gildan intuition in action. It's never led me astray. Sure, its chosen routes can be a bit circuitous, but never mind. To the storage room. To the spoils. वो भाई भाग रहा है तो More old world treasures, perhaps? This place is full of surprises. Do we have a look? Didn't you want to get into the storage room? I do. Fervently. But, well, I got time to focus. Shells, we're not focusing on that right now. Recording, okay? We're not even in the band meeting. Sort of campus practice, right? Merch. We need merch. Stickers! You're not a real band until someone vandalizes government property with your sticker. Colleagues, I have been asked to remind you that conversations determined to be irrelevant to servitor training are discouraged. What were you saying about vandalizing government property? ऑलराइट जाना मेरे ख्याल से ऊपर है We लेकिन drained enough water for what we need to do, but I wonder if I could empty out the whole dam. ये Pipes. ऑडियो लोगा या डेटा पॉइंट अभी कुछ है Maybe I can drain the rest of the water from here. Sure are a lot of valves. walls 1-1 Should check my focus first. All right, time to get the flow going to the right place. I say this as a man typically enamored of complexities, but this looks like it might be a little much for me. Don't worry, I think I've got this. Music to my ears. To each job, its proper tool. Toothpicks make horrible arrows, as the saying goes. ये तो टूटा हुआ पाइप ओके पानी आ रहा है इस तरफ से ठीक है हमें पानी वहां पे ले जाना टरबाइन में यहाँ से ये जाएगा इस तरफ यहाँ से You got a competent mind, girl. A mind for nuance and finesse. Not I. No, indeed. Not old Gildan. सही है ऐसे नहीं घूम घाम के वहीं आ गए तो This job demands a certain degree of patience, doesn't it? I'm afraid I inherited my mother's restlessness. That's not quite right. Been at this a while, girl. No room to judge, mind.
I once spent half a day flummoxed by a Karja puzzle box. Looks like I'm on the right track. Okay. One step closer. ये वाल कुछ गलत है मेरे ख्याल से, मेरे को इसको घुमाना पड़ेगा। Looks like I'm on the right track. एक मिनट, इसको इधर घुमाते हैं। सही है। और फिर इसको घुमा देते हैं। भाई साहब। One step closer. Getting there. भाई या तो ये गलत है। Right track. Something's not right. I guess ये ऐसे रहेगा। There. One step closer. लेकिन इसके ऊपर मैं कैसे पहुंचाऊंगा यहाँ से? Getting there. ये तो सही लगा हुआ। भाई अजीब पजल है ये। Looks like I'm on the right track. Nice. The water's flowing, just not where it needs to. Nice. There. One step closer. That's not quite right. There, that should do it. I should head back. See if that took care of the rest of it. Started working, did you? Of course you did. Never met a conundrum you couldn't unconundrum, have you? The door's open. Guess it had sealed because of the flooding. All right. इस साइड भी कुछ आ गया? नहीं।
अब मेरे को कहाँ पे जाना है? एक मिनट, यहाँ से रास्ता है। This must go down to the lower level. Ugh, it stinks down here. Looks like that's everything. You smell that? I should head back up with Gildan. Smells like a forge-side morning in the claim. See? Check this out. We could just bang on this pipe, you know? Could we sample that or? Totally. Like, what about after the... Oh, sorry. Just a sec. Laura? I need to take a break. Laura? Hey! Laura! So, as we circle back around to the matter of the supply room, आजा भाई जल्दी। भाई क्या बदलता सही में। आ रहा है वो कि नहीं? हाँ नाइस। I can't wait, I can't wait, I can't wait! Almost there! Soon I'll hold the looking glass in my hand, just like Mom and I used to. थोड़ी स्टटर हो रही है यहाँ पे गेम। वापस आ चुके हैं हम। ऑलराइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, ऊपर, राइट। What are you doing with your hands there, girl? Nice. I can't believe that worked. I thought you'd lost your mind, tickling the empty air like that. ऑडियो लॉग हुआ? हाँ। I mean... Where is it? This is it. Where did it go? We have to play together, what? Maybe 2 more times? Nah, shells. Farewell tour! Reunion tour in like 6 months. Fans do it all the time. For our adoring fans. It's not that hard to stay in touch, Shelly. We could practice an I could have sworn I saw one in here. क्या हो गया भाई? ओके, वहाँ पे भी कुछ है। I can always use these. सप्लाई ग्रेड कहाँ पे छुपा कर रखी हुई है भाई? Such things, not 2 delves in a row. Okay, let's fix the panel and shut this place down. Gildan? Everything okay? I was so sure I saw it. The looking glass. I was so sure. Right there in the window. I was... Of course. Trick of the light. Nothing at all. I'm sorry, Gildan. It must have meant a lot to you. Oh, well. Much as any artifact of the old ones would mean to me, really. It's fine. I'm fine. Besides, what are the spoils compared to the delve? That's why we do it, girl. The delve, not the treasure. And what a delve it was! Ugh. By the great blazing forge, I'll never forget that. Now then, I believe we have some repairs to make. ओ भाई बेचारे का दिल टूट गया इसका।
Oh, that's a whole lot prettier, isn't it? What does it mean? It means it worked. By the forge! You are a wonder! Do you hear that often? I'll hazard a guess you do. I've heard something like that once or twice. Oh, she's modest now. A master of the arts of the old ones, a delver to shame the entire claim, and she wants to be modest. Ha! It's not like I did it alone, Gildan. No. No, I suppose not. So what's next for you? On your way back to the claim? And deprive the people of Song's Edge the story of this encounter? Perish the thought! I'll stay there a while longer. But a story is best told by all who encountered it. Come and lend a hand, won't you? Overflow basin empty. Interior accessible. Minimal flood damage. Sounds like the basin is dried out too. Maybe I'll take a look. Another adventure so soon? You go on ahead. I'm gonna stand right here and bask in our victory for a while longer. All right, मेरे को ओ भाई ये क्या हुआ? Death. फिर से अभी क्या हो गया? एग्जिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं? अच्छा Water's lower. And going by that sound, I think Lao Lai's already at the din. ये आवाज कैसे आ रही है? ऑलराइट, मेरे को किसी ना किसी मर्चेंट से ना यहाँ पे मैप खरीदने पड़ेंगे, बिकॉज जो कलेक्टिबल्स हैं वो मैप खरीद के ही मेरे को लगता है कि नज़र आएंगे मेरे को। ऊपर कुछ है वैसे। अच्छा ये तो प्लांट है भाई, मेरे को लगा कुछ है। ओके इससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है मेरे को। इसको बेच देते हैं फालतू के आइटम अगर है तो। नहीं है
ओ भाई फिर से लड़ूं क्या इनसे? भाई एक और आ गया। ये लो एक तो गया। Not bad. दूसरा कहाँ है? वो रहा। ये बंदा कौन है? भाई पंगे लेने जा रहा है, मरेगा। ओके यहीं से आवाज आ रही थी। नीचे कुछ है इसका मतलब। ये कौन है भाई? ये ड्रम बजा रहा है। यहाँ पे भी डेटा पॉइंट आई थिंक। वेट 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 वेट, यहीं से एक्सेस करना होगा। Live from the illustrious Overflow Basin Studios, it's Concrete Beach Party! A 1, a 2, a 1, 2, 3, 4!
भाई लोहे की शक्ल देख के ना ऐसा लग रहा था ये बहुत अनोए हो रही है, और हो भी रही थी, मैं भी हो रहा था। लास्ट गर्ल्स ऑन अर्थ। Yeah. ओके, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये यहीं पे रहती है मेरे को लगता है। You look happy to be playing again. I don't know what you did, but the water drained in the snap of a short song. What do you think of the music? I've never heard anything else like it. That's because there's no other place with such resonance, such intonation that rattles your ribs with its power. And of course, no one else knows these pipes like I do. I learned them by ear before I could walk, strapped to my father's back. Thank you for draining the waters. Not just for myself, but for my ancestors and their songs. Please, take this as a token of our gratitude. क्या मिला? Blue gleam. Okay. Nice. ओके लेट्स गो भाई, मिशन तो हो गया। Good for an old remedy. ऑलराइट, अब ये कहाँ पे जा रहे हैं हम? अच्छा, नेक्स्ट वाला मिशन है टॉल नेक। फाइंड द मिसिंग टॉल नेक पार्ट्स। अच्छा, एरे स्टेबलाइजर। और वो पार्ट्स कहाँ पे होंगे टॉल नेक वाले? आई गेस ये हैं दो पार्ट्स, जब ही हम रिपेयर कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो यहीं चलते हैं फिर।
वही मैं कहूँ भाई, टालनेक को कैसे मैं बहुत देर तक उसको ढूंढता रहा वहाँ पे कि कोई कंट्रोल पॉइंट होगा जहाँ से हम इसको ओवरराइड कर पाएँ, लेकिन आई गेस इसको रिपेयर करना पड़ेगा पहले। उसके लिए हमें चाहिए जो कुछ भी है ये मशीन पार्ट्स आई थिंक। थोड़ी सी स्टटर हो रही है ये DLC। Tasty. एक पार्ट तो ये रहा। Be fascinating if they weren't looking for me. भाई बहुत आए तो। Part seems intact. Tomahawk's a little tough. ऑलराइट, आई गेस एक पार्ट मिल चुका हमें। ये रहा दूसरा पार्ट। ये ऊपर भी कोई मशीन है। Safe for a few minutes anyway. जल्दी इसका हथियार उठाओ। या ये नया हथियार था भाई। ये वाला वेपन मैंने देखा नहीं है पहले। हो सकता अंदर कोई और भी मिल जाए, तो इसलिए इसको लेके ही चलते हैं साथ में। हाँ ये रहा। Yeah. और भी है भाई।
ओके सारे पार्ट्स मिल गए, अब चलते हैं। Think of summer sun, breeze through the trees. भाई जो भी कहो, ये एरिया बहुत सही लग रहा है मेरे को, लेकिन अगर ये लैग ना करे ना, बहुत अच्छा एरिया बना रखा है इन्होंने। Well, that fits. Sure hope it works. ठीक ऊपर है। Well, it's in better shape than it was. Okay, if I'm right, I just need to get the power flowing through it again. And if I'm wrong, we at least know what's watching. That should wake you up. Easy now. Easy. Oh, भाई Never easy. No way I'll be able to take a machine that big down. मेरे को उस लाइट पे जाना पड़ेगा। Forget about traveling light. I should be able to jump onto the tall neck from here. ऑलराइट, रिसोर्सेज देख लेते हैं। क्राफ्टिंग, वेपन्स, 44 टीयर है। हाँ ये तो बढ़िया ही है। उसके बाद डैमेज 40, 49 फायर वाली। हाँ बढ़िया है। इसमें भी देख लेते हैं, 44 है इसमें, 45 लगा सकते हैं इसमें। नाइस। P-Square 46 है। ओके 44 Beast damage, fire. यार ये बढ़ा तो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कम भी हो रही हैं इससे, तो ये यूज़ करने का कोई बेनिफिट लग नहीं रहा मेरे को। ठीक है, शॉक देख लेते हैं, 43 है ये। ओके ये बेस्ट वाली लगी हुई है। टीयर 44, हाँ बढ़िया। डैमेज 41 थी। शॉक 40, सही है बाकी तो।
Can my focus show me anything? ये क्या है? अच्छा बोर है तो वो ये क्या है? अच्छा ये इसके ट्रैक्स हैं टॉल नेक के। वहाँ पे मशीन्स हैं इसलिए मैं उस रीच पे गया नहीं, क्योंकि फिर उनसे फाइट करनी पड़नी थी, इसलिए यहाँ पे वेट ही कर लेते हैं। ये आ जाएगा अभी घूम घाम के भाई थोड़ी देर में। ओके ये क्या है? I could check my focus, see what it sees. बहुत धीरे चलता भाई ये टॉल नेक। ये क्या है? Perhaps my focus can help me. Made it. Now to climb up to its head. भाई क्या होता अगर मैं इस पे चढ़ ही ना पाता इतनी देर इंतजार करने के बाद भी। नाइस, अब एरिया खुल जाएगा पूरा का पूरा। That's coming with me. ऑलराइट, सब कुछ हो गया कंप्लीट भाई। अब कैंप फायर ढूंढ लेते हैं फटाफट। सबसे नजदीक यही है कैंप फायर। From the Shadow Karja. Now they have no claim on the throne. नाइस, सेव हो गया। ऑलराइट, मैं भी स्ट्रीम कर देता हूँ यहाँ पे एंड। उसका रीज़न ये है, मेरे को लग रही है भूख बहुत तेज तो मेरे को खाना खा लेना चाहिए था वैसे स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले, बट मेरे को भूख लग रही है। और आज के लिए काफ़ी होगा स्टार्टिंग के लिए। थोड़ा सा स्लो पेस था ये जो DLC की स्टार्ट थी, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा फास्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूज्ड टू हो रहा था कि यहाँ पे हमें क्या करना है और स्टोरी क्या है, तो मेरा ध्यान थोड़ा उस तरफ था, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो स्टार्ट कर पाया इसको। बाकी अब फास्ट हो जाएगा तो इजीली सब कुछ कर पाएंगे हम। सो एनिमी टाइप भी वही पता लग गया कि कौन सी नई चीज़ें हैं। एक तो कंट्रोल टावर दिखा था हमें, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। बाकी कंटिन्यू करेंगे हम इस DLC की स्टोरी को अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम पे। तब तक के लिए गुड बाय।
and have fun. I don't like